जो एक्सपीरियंस मैं तुम सबको बताने जा रहा हूँ, it is the single most profound, spiritually moving, and enlightening moment of my life. This enlightenment was achieved by smoking weed. Some background about me. जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था, till that time I was a regular cannabis smoker for a year and I smoked it almost daily. I was very familiar with this drug and did not until this day think it had the ability to open your mind and make you feel what I felt that day. मेरे लाइफ के इस पॉइंट तक मैंने कोई भी और ड्रग यूज़ नहीं किया है, बट आई यूज़ टू ड्रिंक मोस्टली विथ माई फ्रेंड्स एंड मुझे कोई स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग या ऐसे कोई भी और टॉपिक में कोई नॉलेज या मेरा इंटरेस्ट नहीं था. And I was also not looking for such a thing. The only background I had in this topic was that I have studied Buddhism in my college course. I did not, however, attach any special importance to my knowledge of Buddhism. I found the concept of enlightenment interesting, but I didn't really take it seriously as a real possibility. The concept of enlightenment was certainly not on my mind at all as this day began. I would later come to hold my limited knowledge of Buddhist enlightenment dear as it proved to be a valuable guide and framework with which to understand and give meaning to my experience. मेरा mental health भी ये टाइम तक normal था. I was not stressed, depressed, or seeking any kind of spiritual experience or deeper understanding. I was simply having a good time and living my life. The setting, I smoked the herb. मैं मेरे कॉलेज के डॉर्म में मेरे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था. My friends, who are also regular smokers, were watching a movie and passing around the vaporizer. The weed was high quality stuff and मैंने ये same stuff previously 2 या 3 बार smoke किया है. One of my friend is very concerned with the quality of stuff, so we got the best quality and we knew कि ये कोई भी अलग drug से laced नहीं है. We smoked for about an hour and I guess कि मैंने ये 1 घंटे में कम से कम 30 hits लिए होंगे vaporizer के. While this was a large quantity and I was quite high, it was by no means the highest I have ever been. मैं पहले भी इतना स्मोक कर चुका हूँ, so it was a normal stuff for me. I don't know why, but मेरे दोस्तों की ये आदत है कि when they get too much high, they go to sleep. So after the movie, they turned off the lights and TV and went to bed. But one of my friends started playing trance music. I was very unfamiliar with this type of music, but as I let my mind drift, I began to let it flow through me. One song जो मुझे आज भी अच्छे से याद है, it was Aegeus Polis by Apex Twin. And I believe this was the song playing in the background when I reached my peak. At that time, वहाँ वो रूम में सिर्फ म्यूज़िक एग्जिस्ट कर रहा था एंड एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ मेरा फिजिकल सेंस सिर्फ म्यूज़िक डिक्टेट कर रहा था. एवरीथिंग एल्स वॉज फेडिंग अवे. इट वॉज लाइक आई बिकेम द म्यूज़िक. ये पॉइंट तक आई एम नॉट श्योर कि मेरी आईज ओपन थी या बंद, बट आई स्लाइटली रिमेंबर कि मेरी आंखें खुली हुई थी. Then the music just became sound waves in the air being taken in by my ears. But music somehow became a part of me, filling my entire soul. I made no effort at all to remain conscious, but let my mind flow and let the music take me away. At that point, I am very sure कि मैं वो टाइम में इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट कर रहा था. फ्रीक्वेंसी, वेव्स और म्यूज़िक और वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, मैं वो बन चुका था. एज माई माइंड कंटिन्यूड टू ड्रिफ्ट, मेरे लाइफ का फर्स्ट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, पर ये वो टिपिकल मूवीज़ जैसा एक्सपीरियंस नहीं था.
where you can see your body from above, but it was like my soul is trying to expand and getting bigger and bigger. I felt my soul is trying to become the whole universe. It is very hard to describe in words, but if you know what I am saying, you will get my point. I began to lose the awareness that the music was playing at all. म्यूज़िक ने मुझे इस पॉइंट तक लाने में बहुत हेल्प किया, बट आफ्टर दिस पॉइंट मेरी बॉडी खुद म्यूज़िक को समझ नहीं पा रही थी. इट वॉज लाइक कि म्यूज़िक इज़ प्लेइंग बट माई ईयर्स आर नॉट वर्किंग एनी मोर, बट माई सबकॉन्शियस माइंड इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट एंड trying to make me flow with the music, but all of this was happening subconsciously. And after that I was completely removed from this physical world. When this happened, there was nothing, and nothing is the right word to use here. मैं आज तक बिलीव करता हूँ कि ये सब होते हुए मेरी आईज ओपन थी, पर आई एम नॉट श्योर. Because there was nothing, no vision, no sound, no senses, and it wasn't a terrifying experience also, because to perceive fear you need some knowledge of fear, and while I was there was no self, so it wasn't terrifying at all. पर मैं एक चीज़ के बारे में बहुत श्योर हूँ कि ये वो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस था, वो सडनली नहीं हुआ था. It was more like steps on a stair, one step and then second step, more like stages. The best way to describe it has already been done by Buddhist thinkers, and what I experienced matched exactly like them, what they described. What I had read about Buddhism, enlightenment and nirvana, I will attempt to describe the stages I experienced. But reading upon Buddhist enlightenment would likely help you guys to understand what I'm trying to say here. And मेरा enlightenment का experience कोई गेम के लेवल जैसा नहीं था. Rather it was like a continued steps of stairs. पर वो experience को समझाने के लिए मुझे steps में समझाना पड़ रहा है. The first stage. मुझे बहुत रिलैक्स फील होने लगा. जैसे ही मेरे फ्रेंड ने वो सॉन्ग स्टार्ट किया, आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स्ड विद इट. एंड आई मस्ट से दैट सॉन्ग हैड सम मैजिक इन इट, और दैट वीड हैड सम डिवाइन पावर और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड एनी म्यूजिक लाइक इट. थ्रू आउट दिस रिलैक्सेशन आई ऑलवेज रिमेन्ड इन माई अपराइट पोजिशन, बट मेरा बॉडी पे कोई भी ध्यान नहीं था. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज. And then the second stage started. Next step was जहाँ मेरे sensations मेरे से दूर जाने लगे. I was aware till this time of the body, but all sensations were going away slowly and slowly. At the time I was aware of nothing but the music. धीरे धीरे मैं म्यूज़िक के साथ एक हो गया. बट कुछ दिनों बाद जब मैं उस बारे में सोच रहा था, देन आई रियलाइज कि म्यूज़िक मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ टूल टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एंड फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स इन द प्रोसेस. जस्ट लाइक पीपल यूज हिप्नोसिस, दे टेल यू टू फोकस ऑन वन थिंग. इट वॉज काइंडा लाइक दैट. देन कम्स नेक्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्टेप में मेरे सब सेंसेस वेंट अवे. सबसे लास्ट सेंस वॉज हियरिंग. जो लूज हुआ इट वॉज बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन म्यूजिक, पर एक टाइम आया जहाँ म्यूजिक भी वेंट अवे. सिंस आई कुड नो लॉन्गर सेंस द फिजिकल वर्ल्ड, इट बिगेन टू डिजॉल्व इन माई माइंड एज वेल. आई एंटर्ड अ स्टेज वेयर आई वॉज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्टेड. और थोड़ी देर बाद ये भी चेंज हो गया. I reached a point where मैं भी गायब हो गया, एंड सिर्फ मेरा माइंड ही एग्जिस्ट कर रहा है. As I experienced the sensation described above, where my mind filled the whole universe. In a second, it was like कि मुझे कोई सेंस नहीं था.
मैं कौन हूँ एंड ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम सब खुद के बारे में लेके चलते हैं, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन. जो खुद का माइंड ये पॉइंट तक, इट वाज लाइक, इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट माई माइंड ये पॉइंट तक बिकेम अ गॉड इन इट सेल्फ. एट दैट पॉइंट मुझे नहीं लगता कि दुनिया एग्जिस्ट होना बंद हो गई थी, बट I was vanished and so the world also vanished. My brain was God, but somehow I was in different dimension जहाँ दुनिया का कोई भी information नहीं है. So दुनिया indirectly fade हो चुकी थी, या मेरा mind किसी को भी किसी भी वे में दुनिया के कोई भी आइडिया से ऊपर हो चुका था. अगर मैं ये सब बात को एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो ईजी होगा. सो इट विल बी लाइक माई नॉर्मल सेल्फ वॉज अ स्टिक फिगर ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड माई माइंड वॉज जस्ट नाउ एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ अ थर्ड डायमेंशन. आफ्टर आई वेंट इन टू द थर्ड डायमेंशन comes the final stage. I entered the dimension of stage. It's hard to put it into words, but a space where there was no distance between remaining self of me and the universe. Indirectly, I want to say is I became one with the entire universe. At the same time, however, nothing existed at all. It was infinite and zero at the same time. All was one and one was all. But all was nothing. I told you it's hard to put into words, but I'm trying my best. So again, I will use the example. My old stick figure self had moved from second dimension to the third dimension, but the 2D stick figure is existing fully in the third dimension. And now the stick figure is entering a black hole जो उसे एक ऐसे डायमेंशन में ले जाता है जो डायमेंशन लेस है. ये एक्सपीरियंस होने के थोड़े दिनों बाद I was searching on the net and I found the concept of ego death. But now I believe what I experienced is very similar to this. I have read accounts where ego death is a terrifying experience as the ego has trouble of letting go. And the subject confuses ego death with physical death. In my experience, however, there was absolutely no struggle where the ego attempted to hold on. It simply let go as if being slowly washed and dissolved away. It was completely natural. There was no concept of whether or not I wanted this to happen. It simply happened. पर अगर if किसी को समझाने के लिए I will say that feeling attached to this experience was peace and oneness. पर मैंने अभी तक नेट पे ईगो डेथ के जितने भी स्टोरीज पढ़े हैं, it was all with psychedelic experiences and was with powerful drugs. So maybe I am attaching that ego death idea with my experience, but for me I know my truth, what I have experienced. In that moment, in that experience, I ceased to exist and was both one with the universe and nothing at the same time. Again, it is extremely difficult to describe this stage, but again, I would look to Buddhist reading for a better understanding. I'm not a Buddhist after this experience, but I simply think Buddhist thinkers were able to understand and articulate the ultimate. The enlightenment that I experienced, I would say that this final stage lasted anywhere around 30 seconds to 15 minutes, because I have no idea how longer and till what time frame I was in there. The very peak of it, which occurred at that end, probably only lasted a few seconds. But it is impossible to know because the concept of time was completely unknowable and irrelevant at that moment.
My come down from the experience was very fast and मुझे कुछ भी याद नहीं है. How my senses came back, music came back and etc. But I remember the feeling कि मैं कोई गहरी नींद से उठा हूँ. एंड जैसे मैं अभी तक बहुत बार बता चुका हूँ कि आई डोंट थिंक मेरी आंखें बंद थी. एनीवेज, जब मेरे विजन को लेके मैं कॉन्शियस हुआ और रूम को देखने लगा, आई वॉच्ड द रूम फॉर क्लोजली एन आवर एंड देन आई मूव्ड माई बॉडी एंड सेट अप एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि अभी मेरे साथ जो हुआ, वॉट वॉज दैट एक्सपीरियंस, वॉट आई जस्ट एक्सपीरियंस्ड. मैं बहुत श्योर था वो पीरियड ऑफ टाइम में, एंड आई एम स्टिल श्योर कि जो ये एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस है, इट कैन बी अचीव विदाउट हेल्प ऑफ वीड, म्यूजिक और एनी अदर ड्रग्स. बिकॉज आई बिलीव दैट drugs just help us to boost the process, but I believe that the experience lies within all of us. I have not yet attempted to verify this idea, but दुनिया में ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं एंड पावरफुल मेडिटेटर्स हैं जो ट्रांस लाइक स्टेट में सोबरली कैन एंटर एंड कम आउट, बट इट इज़ वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई आई सेड कि वीड वॉज जस्ट अ हेल्पर एंड नॉट द कॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. ये एक्सपीरियंस को अभी 6 मंथ हो चुके हैं, बट स्टिल मैं अभी भी वो एक्सपीरियंस को मेरे लाइफ का सबसे पावरफुल मोमेंट बिलीव करता हूँ. इट गेव मी अ लास्टिंग पीस इन माई माइंड एंड मुझे इंस्पायर किया कि मैं मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस को और एक्सप्लोर करूँ. एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन शुड टू एटलीस्ट मेक इट अ प्रायोरिटी इन देयर लाइफ टू मेक oneself better and calmer person. And I believe I was also able to achieve this enlightenment due to a perfect combination of the proper mindset, the mind expanding effects of weed, and the soothing nature of the music. I think it's impossible for me to reach the same experience with weed again. It is like that moment where you meet a friend on a bus ride who was a stranger but became your friend, and after that bus ride I know about that friend but I will be never meeting him. And the most important thing is what kind of thoughts and experience we shared on that bus ride, for which I am very thankful to that stranger friend. And that's it. This was my profound experience with weed and I am very thankful for it. Thank you everyone for listening, and always remember peace, love, unity, respect. Bye bye fellow travelers. See you on the other side.